No, Bishayu. Has the program started? Yes, sir, just in a minute. Sure, sure. No worries. I was just Yes, checking my systems. Okay, ठीक है. yes, Thank sir, you. yes, sir. Okay. My apologies, everyone. We'll be starting in a minute or two. But there's some technical glitch and we are working.
Hello, am I audible now? Yes, you are. Okay. So, good evening, everyone. Sorry for the inconvenience caused. I welcome you all to today's session on peace and conflict resolution and prison reforms in India. As members of the Rotaract Club of Noida Youth, we share a common commitment to service, community betterment, and the advancement of goodwill and peace. And therefore, it is with great pleasure and profound sense of purpose that we gather here today on 21st September, that is the UN International Day of Peace. I, Rotaractor Disha Singh, and Rotaractor Tirishi Verma will have the pleasure of serving as the host for today's session. Before we move forward, I would take the time to welcome Rotaract Club of Vizag Diamonds, Rotaract Club of Chittagong City, Rotaract Club of Ahmedabad Elios, Rotaract Club of Mumbai Sky City, Rotaract Club of Dharmpet MP Memorial Science College, Rotaract Club of Delhi South Central, Rotaract Club of N Phoenix, Rotaract Club of Karat City, Rotaract Club of Young Souvenirs, Rotaract Club of Chittagong Crown, Rotaract Club of Ames, Rotaract Club of Madras Mount, Rotaract Club of Delhi Vikas, Rotaract Club of Symbiosis Law School Pune, and Rotaract Club of Jindal Global University. It's a pleasure to have you all in the session. I would now like to welcome the President of Rotaract Club of Noida Youth, Rotaractor Alia Mirza, to deliver the welcome address. Ladies and gentlemen, good evening. I am Rotaracta Alia Mirza, President of Rotaract Club of Noida Youth, RID 3012. I am truly delighted to welcome you all to this important session on peace and conflict resolution, the need for prison reforms in into addressing a critical issue that touches the very core of our society, the state of our prisons and the urgent need for reforms. My special thanks to Mr. Aslam Ahmed sir and Mr. Sitaram Sharma sir for accepting our invitation as guest speakers for today's session. Before we dwell into the heart of our discussion, I want to take a moment to reflect on the significance of our gathering. In a world that often seems overwhelmed by conflict, just a minute, our our just a second, there is some network issue. Yeah, our correctional facilities, our prisons are meant to serve not only as a form of punishment but as instruments of rehabilitation and redemption. They should be places where individuals who have made mistakes are given the opportunity to reform, to rebuild their lives, and to uh, reintegrate to society. As law abiding citizens, however, the reality we face today is far from the ideal. India's prison system faces numerous challenges, including overcrowding, inadequate infrastructure, limited access to education and vocational training, and a lack of mental health and rehabilitation services. These issues not only hinder the rehabilitation of inmates but also contribute to a cycle of crime. Today, we are fortunate to have a distinguished panel of experts who will shed light on the current state of our prisons and share their insights on how we can build about much needed reforms. The expertise and experience will guide us in understanding the complex issues surrounding our correctional facilities and exploring innovative solutions. As we embark on this journey of exploring and dialogue, I urge each of you to actively participate, ask questions, and share your thoughts. Together, we can harness our collective wisdom and creativity to chart a path towards a more just and human prison reforms in India.
Let us remember that the pursuit of peace and justice is not a solitary endeavor but a shared responsibility. By coming together, we take a significant step towards building a more equitable and harmonious society. Thank you for your presence and your commitment to this crucial cause. Let us proceed with an open heart and open mind, seeking solutions that will bring us closer to the vision of a just and compassionate society. Thank you. Now I invite Rotaract Anshi Gupta from sponsorship team of our club to throw some light and discuss with all of you our initiative that we have taken to curb the social evil of suicide. Thank you. Today, we gather to shed light on a critical issue suicide and to discuss our mission to raise awareness and provide support to those in need. Suicide is a global crisis indiscriminately affecting individuals from all backgrounds. It's a subject we often shy away from due to discomfort. But silence won't save lives. It's time to act. Our campaign focus on anti-suicide efforts aiming to create awareness among people. Each year, millions lose their lives to suicide, leaving behind shattered communities and families. However, in this darkness, there's a glimmer of hope that we must nurture. Suicide is a silent crisis that affects countless lives, but together we can be the voice of hope. By donating, you become a lifeline for someone in the darkest moment. Your support can save lives, inspire hope, and remind people that they are not alone. Together, let's stand among against suicide and work towards a world where every life is valued and cherished. Your donation matters. It can be the beacon of light someone desperately needs. Contribute today and be a part of the solution. In conclusion, remember that there's always hope, even in the darkest times. Life may be challenging, but it's also filled with moments of joy, love, and connection. Reach out, seek help, and together we can choose life and find hope amidst the darkness. For your convenience, our UPI details can be found in the chat box. Together, we can light the path to literacy and empower countless lives. Thank you for your generosity and belief in our cause. Now, may I request Nidhi to play the anti suicide anthem? हे क्या चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वक्त ये बुरा चल रहा है, क्यों जैसे पहले छाया था फिर से छाएगा, खोया हुआ वक्त तेरा फिर से आएगा, तू अंगार है, तू बवाल है, जिसका जवाब ना हो तू वही सवाल है, तू चीर दे, तू फाड़ दे, सुसाइडल थॉट जमीन में गाड़ दे, मत कर इतनी फिक्र कि फिक्र को भी फिक्र होने लगे, तू बंदा बेमिसाल है, तू बंदा बेमिसाल है, काम ऐसा कर के जिक्र होने लगे, तोड़ दे मोड़ दे वो थॉट्स, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे बस मेरे यार, जिंदा रहे. Love your life at any cost.
Hello everyone. Greetings, distinguished guests and esteemed participants. I am Rotaract Director of Community Services in Rotaract Club of Noida. It is an honor for me to welcome you all to today's webinar on peace, conflict, and resolution, the need for prison reforms in India. We are indeed fortunate to have with us today two remarkable individuals who have dedicated their career paths to prison reforms in India. Allow me to take a moment to introduce them. First, we have Mr. Aslam Ahmed, a renowned social activist and prisoner reformer who has been working in this field for over a decade. Our second distinguished guest speaker is none other than Mr. Sitaram Sharma, who currently serves as a jail superintendent at Muzaffarnagar district in Uttar Pradesh. Allow me to introduce Mr. Aslam Ahmed as the keynote speaker for the webinar on peace and conflict resolution, the need for prison reforms in India. Mr. Ahmed's legal experience spans over more than 2 decades, during which he established himself as an accomplished lawyer and partner at the Singhania Co. Mr. Ahmed's success extends beyond domestic litigation and arbitration, as he has successfully handled international arbitration as well. He has also advised and represented various parties under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, such as financial creditors, operational creditors, resolution applicants, and resolution professionals. It gives me a great pleasure to invite Mr. Aslam Ahmed to start this session, and we are eagerly await the knowledge, the solutions he will impart upon us. To take this forward from here, I request Mr. Aslam Ahmed to start this session. Over to you, sir. Thank you, Tarishi, and thank you, Alia. First of all, am I audible? Yes, Hello? sir, you Yes, are audible. Yes, Yeah, sir. because the sound system the sounds that I am receiving versus are little low. Maybe there's some problem at my end, so I will keep the video on and off. But if we can hear, then that's fine. Yes, sir, we So can I hear. will begin. First of all, my congratulations to the Rotaract Club for hosting this webinar on this such an important subject, peace and conflict resolution, the need for prison reforms in India. In fact, these two headings I see as two different headings, and actually they are quite capable of independent sessions in themselves. Peace and conflict resolution could be one, and need for prison reforms in India could be another. But it's good that you have taken the two together so that we can get a holistic view from speaking for myself, I can get the holistic view from you all as well as the other speaker. And also my congratulations to your club for having devised and have acted for better cause of society and having devised an anti-suicide anthem. It was really nice to listen to that. Great work done by you all, because human life is very precious, and there are many reasons for death to occur. But one of the reasons for death to occur should be one own self is something that should not happen, because there are a million other reasons for a person to die. And human life is very, very precious, and as rightly pointed out, that every individual on this planet earth should be able to live a dignified life, a life without fear, and a life where they do not have to think that good times will come back or bad times are there to last forever. So congratulations on that score. Firstly, I will just make a little amendment to my introduction. I have not been in this particular field for that long, as you mentioned, for a decade. Yes, this is a subject that is highly close to my heart, and I have been socially active. As a lawyer, I have been doing mostly civil law and corporate law, but at times I do take up causes, and therefore I was happy to be part of this discussion. But that's not my core area, much as I would have wanted. Perhaps when I was doing law, and the reason we most of us do law, I think that was the reason for me. Uh, Other than the fact that the reason for me to think of lawyers was it was a complete what you can say a filmy vision.
where an advocate is either defending someone who is an accused or defending someone who is really not an accused, he is not a victim or is acting for a victim. So human rights are the concerns that usually a student usually thinks of as a career, and I used to think of that as well. But then destiny had something else in store, and I started uh, developing my career towards the corporate side. But this remained very close to my heart, and therefore, whenever there have been some sort of conflicts or wherever I can help someone, I do provide help, do appear for them, do give them legal advice, or help them in a court of law or in a police station, and things like that. Yes, that has been but that's not my. That is not something that I do day in and day out. That is the correction that I would like to make. Now, to start with the main topic, first of all, I was thinking when I was told about this, obviously, state of prisons in India, I think Sitaram Sharma sir will be speaking. I was told to speak generally on prison reforms and legal reforms in this sector. Why do we, ever since humanity has evolved, we have to think, why do we need state? Because state has been characterized by someone as a necessary evil. If you look at offenses being committed, then many offenses are being committed by someone who is having a position of power. And they say that with absolute power comes absolute corruption. Still, humanity has needed state, and there are two most important objectives or two most important reasons that state has existed. And it is for the protection of life to begin with, and then protection of property. Now, under these two subheadings, you can put a number of subclauses. In protection of life would come respect, that is protection of one's respect or esteem, protection of one's health, one's limb, one's bodily parts, one's mental health, so that life can be enjoyed thoroughly and with comfort and without any fear. And the other is protection of property, in which would be included the right to possess that property, the right to dispose of that property, the right of recognition as the master or exclusive owner of that property, and whatnot. But if you look at society as a whole, then the state exists for these two reasons. And state is also tolerated for these two reasons, despite all its vices, because there is no alternative to state. Because if there is no state, then there would be chaos. If a state has absolute power, that may be bad in itself, but not having a state would be absolute chaos. A state that is not able to protect life or property, we refer to such a state as a failed state also. Now, what does the state do? Now, whenever someone's life and all things that come with life, as I mentioned, and whenever someone's property and all things that would come together to enjoy that property is threatened by an individual or a group of individuals, then there are theories of punishment. But what does punishment mean? Punishment means that an unwelcome outcome or an undesirable outcome that visits upon a person for doing an act that is perceived against the law. That is what we would generally and typically call as punishment. Someone does something. Why does someone do something? There is a theory of pleasure and pain. We do something because either we feel pleasure in doing it, or we feel that not doing it would lead to some sort of pain. So there is a theory of pleasure and pain. We either do something because we like it, or we abstain from doing something, or we do something particular because we want to avoid any pain associated with it. For example, if we do not eat, we will be hungry. That will lead to discomfort. That will be a pain. So we will eat. We will also eat for pleasure. That is one thing. But we will also eat because we want to avoid some sort of pain.
So therefore, ancient human beings thought of pain as one mechanism which would be unwelcome outcome that would visit upon a person if he were to breach, so to say, the social order of that time when ancient human beings were living, ancient or medieval or whatever, and that applies equally today also. I would not refer to ancient or medieval in any manner which is derogatory, because what we are today makes what our circumstances make us today, their circumstances made them when they were there. But inflicting pain was the theory that resulted in several theories of law where a criminal would get punished. If you look at punishments, they have not changed much. In ancient times, a king could send a person to exile, which would look like a very good punishment, in the sense that in exile, all that is done is that you are removed from one location to another, but otherwise you are at liberty to move around. Your life is safe, your limb is safe. Then there were other kinds of punishments, which you could today say torture methods, like amputation of hand or feet, or maybe killing someone by burning the dead person and things like that. And of course, then there was fine, etc. At the society level, one form of punishment that was followed, divorce the state, was a boycott. This thing of boycott actually led to various new ethnicities that cropped up in course of time. For example, you would recollect in India, there used to be a Criminal Tribes Act, which was repealed as recently as 2-3 years back. It was not in use, but the Britishers came with the Criminal Tribes Act. So a person born into a tribe was a criminal. Why that was so? Because when there was a boycott of a particular person, his family was also boycotted. They had to live somewhere else, and then there they would grow. They would remain an outcast, and their ethnicity would become a criminal tribe because they would not be accepted into society. In modern times, society seems to have moved on from inflicting pain in particular to different kinds of punishment, which would be irreversible in nature, because there was a growing recognition that such punishments that are irreversible are inhuman, because there is always a scope for error whilst punishing a person. Maybe a person was never a thief, but he got punished wrongly. Maybe he was never a dacoit. Maybe he had never committed a crime. So in course of time, a jail term become the most obvious choice, because in jail term, the only thing that a person loses visibly, so to say, is time. Otherwise, he remains intact. So slowly, humanity moved towards jail terms, and therefore, when Indian Penal Code was enacted by the British, they recognized 4 or 5 types of punishment. And none of these punishments has anything to do with inflicting any pain, I would repeat, on human body. There is a simple concept of simple imprisonment. That is one kind of punishment. Rigorous imprisonment. That is an imprisonment with hard work. That's rigorous imprisonment. Fine. Then there is death penalty and forfeiture of property. This is what we have today. And this is what we have today in most jurisdictions in terms of punishment. The Britishers also came up with the Prisoners Act of 1894 that related mostly to prison administration. But insofar as the Britishers were concerned, or current Indian judicial system is concerned, the punishments are 5 that I just spelled out. Now coming back to why punish a person. Today the theory is that you can punish a person, but at the same time ensure that he can be rehabilitated back into society. Because as I mentioned, that it is possible that a person was never
a criminal and he got wrongly convicted. So therefore, we have the need for prison reforms in India. Just as a need was felt that there should be punishment reforms from the medieval times to ancient times to current times, there is also a need for prison reforms, because the conditions inside prisons, of course, that subject is going to be touched upon by Sitaram Sharma sir, so I am not touching on that aspect. I am just going into the theoretical part of it. That when we inflict someone with a prison term, what we are doing, we know that there are certain fundamental rights that are guaranteed to citizens within India. And in fact, there are some rights which are so fundamental that they would be available even to a non-citizen within India. If I may say so, even a person whose citizenship is from Nepal or Bhutan or Bangladesh, or who has illegally entered into India from Burma or anywhere else, will still have some basic fundamental rights. They may be deported is one matter, but they will still have a fundamental right. Some fundamental rights they will still have. If they are being taken to a hospital, they cannot be denied entry into hospital because you are not an Indian, for example. So what are the fundamental rights that a prisoner will have or will not have is a big question. Because we know that our Article 19 to 21 is specifically about individual freedoms. Freedom of speech, expression, profession, right to assembly, movement, etc. Once, of course, there can be limits to these freedom, which are characterized in the wordings of the Constitution itself, that according to the law made. So a law can be made to curtail freedoms, that the reasonableness of the law will be tested again on the anvil of the Constitution itself. But there is a framework of the Constitution. But we know that once a person has been imprisoned, his many of the fundamental rights, particularly many rights that are read into Article 21, are invariably taken away. He cannot spend time with his family, for example. He loses the right of comfort that he had either in his office or in his home. He has to share his space with others. And one can think of innumerable aspects of human life that a person in prison will not be able to enjoy at all. What makes matter even worse is that there is no such distinction in practice. Although the Prisoners Act does talk about a differential in treatment to inmates in jail who have been convicted and who are not convicted, that is to say under trials. But to my knowledge, there may be separate cells for under trials. They may not be mixing with convicted prisoners. This may be so, this may not be so. But their conditions are no less good and no less bad. Firstly, a distinction has to be made in prison reforms about a person who is still an under trial, and therefore in our jurisprudence, in India's jurisprudence and in the international jurisprudence, is still to be presumed innocent. If we have assumed that a person is innocent, howsoever heinous a crime may be, I am repeating, howsoever heinous a crime may be, if I can understand that a person may not be granted bail if the crime is very heinous, particularly crimes against women, it's very difficult to get bail, and perhaps rightly so. We are not discussing the jurisprudence on bail and crimes in general, but perhaps rightly so that he will be denied bail. But he has to be presumed innocent inside the jail also, so long as he is not convicted, in which case I personally believe there is a case for under trials to have a complete separate treatment, separate jails with all facilities that they would enjoy. The only facility that they should not enjoy is liberty of movement, because that may affect the health of the victim and that they may also be destroying evidence. But once we have decided that they are not yet declared guilty, then they have to enjoy all those rights that they could otherwise enjoy. Now I will come to the other persons who are convicted. Even convicts will have some rights, as I mentioned.
They cannot be deprived of their, for example, you cannot use inhuman methods in dealing with them. That is fundamental. One cannot use, one cannot give them things that they do not want to eat. If a, maybe they will not eat a lavish food, they will not eat delicious food, but they will eat something which is full of nutrition and takes care of their hunger. They will be given a conducive environment to live. A jail term should not mean that it's 45 degrees and in their cells there's direct scorching sun, and leave alone an AC, there's not even a cooler. Then we are giving them double punishment. Or if it's winters, they don't have any other comfort. Some basic rights to inmates of jail will always remain, because what we have decided in our current jurisprudence is that their liberty of movement will go away. We have not decided that their other entitlements to life will go away. So our prison reforms and the model, I have not studied the Model Prisons Act in detail, but I do understand whatever I have learned through their reading of it, that it is a good department Prisoners Act, because it does provide for rehabilitation of prisoners and ultimate absorption into society also. We must remember one thing. In practice, I have seen in my visits to Tihar jail and in and around the area, that of course today there is a sea change from the 1950s to 1960s, that jail conditions have improved. Tihar jail is of course an example, and the example of Muzaffarnagar jail is also a great example to follow. That there are semi jails, there are open jails. Some of the jail terms inmates are actually sent out and they can work and be employed and come back, because there is a degree of trust that they will certainly be coming back. But one thing that I must say, that the society continues to keep moving continually, is in one front, that from ancient to medieval times to now, one thing that we have not been able to overcome is the stigma that is attached to conviction. I think that once a person has been convicted and he has undergone the punishment that the society through the democratic system fixed for him, then such a person should come out of jail, then he should be considered a complete innocent. This is something I was reading elsewhere somewhere, that even in Manu Smriti and the Vedas, it is said that if a person has undergone a punishment, then once he is out of the punishment, then he is to be considered a complete innocent and therefore absorbed into society. And in Islamic theology also, if a person is complete innocent, then there is a statement by Holy Prophet Muhammad that you have to embrace him as if he is a complete innocent, because he has suffered his sentence. This is something that humanity needs to learn even today, that if a person has already suffered a jail sentence, whether it is check bouncing dishonor, whether it is any heinous crime, if he has not been put to death, if he has been put to death, he won't be coming back to society. But if he has served his sentence for 14 years or 10 years or 5 years or whatever, then the state must ensure that he comes out, not only the state must ensure that he comes out a reformed person. Society must not also ask a person of his antecedents, why is he seeking employment? Why should a person, we know for a fact that if a person has been even called by a police and given the order of a job that he might be applying, if we know that even a person has been called by a police person, we will be thinking twice about giving him job employment in our own offices. Then how will a person be absorbed back into society when he has already been punished and he is out in the open and is considered reasonably to be a reformed person now? There can be exceptions. I'm not saying exceptions can't be there. These things have to be debated and then decided. But why should a person still undergo, if I may say so, the ignominy of trial and the punishment? Firstly, he suffered for a crime that he committed inside a jail room.
and then when he is out, he is still made to suffer because he had done something for which he has already been punished. Now society wishes to punish him again by either ignoring him, or by disregarding him, or by not giving him appropriate space, or not giving him employment, etc., etc. So these are my some of the thoughts in relation to what I believe is that we as a society need to move on. And I think I have already spoken for 15 minutes, and I was told that I have to speak for 15 and 20 minutes only. So I will just end with a few remarks on this position, that human dignity is very important. No doubt, dignity of one person is very important. But we have also been told that if 1% is innocent, then he should not be put to jail, even if it means that 9 persons who are guilty are getting scot free. That is something that must remain fundamental to our thought process. That must, because the social order rests on that presumption. Because otherwise, if we are unable to hang on to this particular theory, then we will be convicting everyone. And as lawyers or as social activists, if we think in the same manner, or if judges, I will add judges to that because that's very important. If judges or social activists or lawyers think in the same way that a person who is not being groomed in the knowledge or in the field of law, and start assuming a person to be guilty, being cautious is one thing, but start assuming a person to be guilty and therefore will deny him the basic rights, thinking that this person deserves it, is as bad as taking solace from the fact that if a person has been run over by a bus and he dies in that crash, and we learn that the person was run over actually because he was drunk, therefore he was not in his senses, and therefore we say it was his guilt, it was his problem, that he was, instead of walking on the side of the roads, he was walking in the middle and he was crushed by a bus, and therefore we feel less pain than compared to another man who was walking. I think we will be doing the same kind of mistake. With this, I will end my talk, and I will be happy to take any questions around this subject. Thank you so much. Thank you, sir. It was really insightful listening to you. As we transition to the Q&A session, I encourage all attendees to seize this opportunity. Can you be a little louder, please? Sorry. Yeah, I'm so sorry. I was saying No, thank no you for the worries. insightful session. As we transition to Q&A session, I encourage all attendees to seize this opportunity to engage with us by asking questions that relate to Mr. Ahmed's topic. I kindly remind everyone to keep their inquiries brief to subject matter. If anyone has questions, they can either unmute themselves and ask Sir itself, or they can send us the question in the chat box. Good evening, sir. Good evening. Am I audible? Yes, yes. Yeah. Please carry on. Yeah, my question is, I being a person who makes a bit prejudice before the actual thing, so my concern is that how to remain neutral towards the people who are out from jail after the completion of their punishment. For example, like I will give a situation that I have a daughter and hypothetically she gets kidnapped or raped by a person and he gets imprisonment punishment, and when the same person gets out from jail after serving the punishment, he is around my daughter. So that's an obvious and involuntary action of mine, that I'll try to see that person with the same eyes that I had before he served the punishment or while he was serving the punishment. So, how can I be unbiased and neutral towards that person, that he must have learned his lesson throughout the punishment? Okay. So
This is a particular question, of course, it would be difficult for me to answer, but let me answer it this way. When I mean that we should look at that person as being innocent, I didn't mean it in this manner. Of course, you can and ought to remain cautious. You would anyway remain cautious, as I understand. Any 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 woman would otherwise remain cautious, generally also speaking. So you should remain cautious. But what I mean to say, and if your question is stemming from that observation of mine, then only I am responding like this: that if it comes to employment opportunities ever, then that person having been acquitted should go to, sorry, not having been acquitted, but having undergone a sentence, should therefore weigh in his favor that he has served out his sentence. Now, coming back to answer your question, you would remain skeptical, and that is very natural, regardless of whether the person underwent a sentence because he was convicted, or that person was never convicted at all and got acquitted, although the case in point that you are making, in which case you would or any lady would personally believe, and with all respect to that belief, that her daughter had been wronged. But suppose the person got acquitted. Even in that case, you would remain, you would be cautious. So you and one in such a situation has to remain cautious. But there's no difference in that case whether a person had been acquitted, but you believed that he was wrongly acquitted, and in another case where the person was rightly convicted, served a sentence, and was out. In both cases, you will view from your perspective in the same manner, and you would perhaps be right in your approach. But I am saying that when it comes to employment opportunities or absorption into society, then that person has to be accepted. Otherwise, then the other best penalty was to put that person to death. That is my personal thought process. All right, sir. I got your point. Thank you. Yeah. Thank you, Ria. We have another question from Pritika. So the question goes, good evening. I'm interested in working towards prison reformation after completing my master's in May 2020. So am I audible? I guess. Yeah, you are audible, but I think your question is yet to come, correct? Yeah. So the question is that this person has been working towards prison reformation after completing my master's in May 2024. So she's Okay. asking, where should I start my journey of work with, and how should I approach government organizations about the same? Okay. So she has already done, she has completed her LLB. I believe she's saying that she No, wants to sir. work like I'm in prison reformation still doing my after master's. Okay. Um, Hello, good evening, sir. Actually, I'm still doing my master's in psychology. It'll Okay. be completed next year, and I want to work towards prison reformation. So, like, how should I start my work with? As in, like, where should I go, and what will be the right You see, if you ask organization that I me, should? if you are doing masters in psychology, and have you also done law? No, sir. Okay, then I think there are many institutes where you can place your resume, but I'm sorry, this question I cannot readily answer because I do not know names of such institute. But there are various institutes in Noida, in Delhi, where you can place your resume. I can get back to you with that answer because readily I do not have names of such institutes. But yes, there are many such institutes which are working towards the cause that you have just pointed out. Okay, thank you, sir. So we will be just taking one more question because the time. If someone wants to ask, you can go ahead, or I will try. So, sir, I have received this question from Sham. She's asking, in your opinion, what are some of the most crucial reforms that could be implemented to improve the conditions of prisons and make a real impact? Yeah, so as I said, I already mentioned that the first thing that I mentioned is the one reform that must see light of the day is that a clear distinction must be made between people who have not been convicted and people who have been convicted. Because as I said, if regardless of whether a person has obtained bail or not, if a person is awaiting conviction, then he has to be presumed innocent.
Once he is presumed innocent, none of his fundamental rights ought to be taken away. Now, if it reflects on the laziness of the judicial system, so be it. A laziness of the judicial system should not come in the way of enjoyment of a fundamental right to an under trial. That is one part. Coming to convicts, their physical conditions, their space time ought to be such so as to ensure that they can get rehabilitated. They are spending a jail time. That is right. Their freedom of movement has been curbed, but there should be conditions which ensure that they can get rehabilitated. They can develop themselves as reformed individuals. Maybe they can have some sort of counseling. I know their counseling goes on, but which, because so if they were bad human beings, they can turn out to be good human beings by being kept in either good company or good counseling. If they had issues relating to mental health which made them commit a crime, then those issues can be addressed. All those issues that ultimately led to the reason of the crime must be evaluated, because judicial system will punish a person for the crime that he or she committed. But once they are inside jail, then the social system has to come in place and see what were the psychological factors for coming there, for um, commission of that crime, and those need to be fundamentally addressed, so that if the idea is to rehabilitate them and so that they will ever be out of jail. And we know that once a person is inside jail, unless he is serving a sentence of death, one day or the other day he will be out of the jail. So, and once he is out of the jail, to address society's concerns, these things must get addressed within the jail premises as to why he, in the first place, what was his childhood, what was his adolescence, why he committed ever that crime which he committed, whether it was terrorism or theft or any other serious violation of human rights, and those would have to be addressed in the new jail system that is proposed. Thank you, sir. Now we will commence to the next segment. Before that, I would like to once again take a moment to thank our esteemed guest speaker, Mr. Aslam Ahmed, for his insightful presentation on the importance of prison reforms in India. Let's move on to the next segment of our webinar. It is my pleasure to invite my esteemed co-host and fellow Rotractor Disha to introduce our new keynote speaker, Mr. Sitaram Sharma. Over to you, Disha. Thank you, Tanishi. Moving ahead towards the second half of this insightful webinar, I would take the pleasure to introduce Mr. Sitaram Sharma sir, who currently is the jail superintendent at Muzaffarnagar district in Uttar Pradesh. Sitaram sir's inspiring journey from a teacher with a dream to a prison reformer is a testament to his unwavering commitment to education and public service, leaving a lasting impact on the lives of those he encounters. It is due to his relentless efforts that the Muzaffarnagar jail, that was once infamous for its unruly prisoners, witnessed a transformation under the calm and guiding influence of Sitaram sir. Without taking much time, I would now like to welcome Mr. Sitaram Sharma to enlighten and inspire all of us. Please take the floor, sir. All Rotaract's club youth, and thanks for providing me this opportunity. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. You are audible. I think allotted 15 minutes, 15 to 20 minutes now. So, I would like to discuss about critical aspects of prisons, which I go through last 6 years of my working. So I would like to discuss in composite language, that is English, because we are working in Hindi areas. So some terminology are in practical going to Hindi. So first of all, basic concept of prison. I think all of you are aware about the basic concept of prison. Why the prison? So prison prison is the imprisonment, that is the people inside the prison. Those are who have deprived from their basic liberty. It is also called temporary isolation from the civil society. Why this isolation is needed? Just isolation, just like
consider it the crime is the basically man is not a criminal. A criminal instinct is inside the man. That overcomes, then it comes in a criminal. So there are two types of criminals: hardcore criminals, that are professional criminals, or professional criminals. Second kind of criminals are impulsive crimes. Prisoners may be any person, including we all of us, if we commit an impulsive crime. So first, Mr. Aslam Ahmed cleared all the basic concepts. Two kinds of practically, sorry, first I want to explain theoretically two types of criminals inside the under trials and convicted. Under trials are those who are facing the legal aspects, and the convicted are those who have accused finally in the crime they have committed. The reform and the rehabilitation. The new concept, rehabilitation is the very new concept in the prison area. Primarily, jails are for deterrence. One purpose of jails was deterrence. Again, with human face, deterrence and reform. Now, reform and rehabilitation. So first of all, prison concept clear. That's why the right of here. सबसे पहले हम बात करेंगे दो थियरीज ऑफ पनिशमेंट. जो पनिशमेंट का इनिशियल जो थियरी थी, एंशिएंट थियरी, उसमें ये था कि हम लोगों को मतलब किसी को पनिश करना है तो उसका मैसेज भी होना चाहिए. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी एंड रिफॉर्मेटिव एंड इंसेप्शन थ्योरी. इन सब थ्योरी में रिट्रीब्यूटिव में ये था बदले लेना है कि एक के जो जिसने हमारे साथ जैसा किया उसके साथ वैसा करना है. तो इसमें कहीं एक जो ह्यूमैनिटी नहीं थी. आज जो एरिया है अभी हमारी थ्योरीज का, रिफॉर्मेटिव थ्योरी एंड डिटरेंस थ्योरी, जो थ्योरी चलती हैं जो हमारी सोसाइटी में अभी प्रिवेल कर रही है. डिटरेंस का एक पर्पज ये होता है कि हमें दूसरे व्यक्ति को ये करना है कि वो उस क्राइम को करने से थोड़ा हेजिटेट करे या डरे. अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और उसको पनिशमेंट मिला है तो उसके एक मैसेज दे भी जाए कि नहीं, इस तरह का क्राइम नहीं करना है, हम लोग जेल में जा सकते हैं. दूसरा रिफॉर्मेटिव थियरी, उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना. व्यक्ति जिसने क्राइम किया है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने आप को साइकोलॉजिकली रिफॉर्म कर पाए. तो ये तो इसके वजह से हम लोग इम्प्रिजनमेंट करते हैं लोगों को. अब इम्प्रिजनमेंट के इनसाइड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे. प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आएगा, इनसाइड द जेल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा. सबसे पहले हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो किसी भी तरह का रिफॉर्मेशन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकली हमें दो क्लासिफिकेशन करने होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल एंड सिचुएशनल क्रिमिनल्स. अभी तक ऑल ओवर कंट्री जितने भी अबाउट 5 lakh inmates are there, not more than 10% are hardcore criminals. 90% are situational criminals. Situational crimes also known as impulsive crime. Impulsive crime क्या होगा, हम लोग को जैसे कभी एक जनरल क्वेरी हो रहा है, घर में झगड़ा हुआ, गुस्से में किसी ने किसी को मार दिया. तो फ्रेंड्स में झगड़ा हुआ, किसी पे नाइफ था या कुछ, उसने किसी को मार दिया, वो 302 तो बननी है जो मर्डर हुआ है. लेकिन क्या वो क्रिमिनल था? एक कृत्य, जब मैं अंडर ट्रेनिंग था दासना जेल में, वहाँ पर मेरे सामने एक केस आया. एक आईआईएम और आईआईटी पास आउट 302 में अक्यूज था. फाइनली उसका कन्विक्शन भी हो गया था. तो उसको सबसे अच्छा केस स्टडी वो था. मैंने उसको बुलाया, उससे बात किया कि वो 302 का वो मर्डर कैसे हो सकता है एक आईआईटी और आईआईएम से पास आउट व्यक्ति. जब उसने अपनी स्टोरी बताई, वो मैनेजर पोस्ट पे था
SCL कंपनी में अकाउंट किसी बिल्स को लेके कोई डिस्प्यूट था, तो अकाउंट ऑफिसर के साथ वो डिस्कस कर रहा था कि इस तरह का ये जो बिलों में गड़बड़ क्यों हुई है। उसी में कुछ हॉट टॉक में कन्वर्ट हुआ मैटर, उसने कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, अकाउंट अफसर ने भी कुछ ऐड की। इसमें ये हुआ कि जो पेपर वेट होता है टेबल पे वो उसने उठा के मार दी एंड द अकाउंट अफसर को कंपनी, अगर वो डेथ न हुई होती, मरता नहीं, तो शायद मैनेज हो जाता, वो मैनेज नहीं होना था। तो वो सारे वहाँ सारा कैमरे वैमरे सारी चीजें थी, CCTV कैमरे थे, तो वो सारा क्लियर कट ओपन करके उसका वो एक्यूज हुआ और convict हुआ। अब जो उस जेल में है, हम उसे या तो रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसे एक क्रिमिनल बनने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका क्रिमिनल इंस्टिंक्ट नहीं था कहीं। वो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन था जो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स था। लेकिन क्या हुआ, एक इम्पल्स आया और उस इम्पल्स ने एक क्राइम करा दिया। इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं, इम्पल्सिव क्राइम होते हैं, वो और वो किसी से भी हो सकते हैं। ये ऑल आर ह्यूमन, और सब में एक इस तरह के इम्पल्स होते हैं कि हम किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे। वो रिएक्शन कभी कभी अगेंस्ट द लॉ चला जाता है और फिर उसके बाद हमको एक क्रिमिनल की कैटेगरी में आना पड़ जाता है। अब वहाँ जेल के अंदर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, सबसे पहले हार्डकोर या प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, और फिर इस तरह के इम्पल्सिव क्राइम वाले डाउरी एक्ट में आते हैं, उनको क्रिमिनल कंसिडर नहीं करेंगे। डाउरी एक्ट बहुत सारे हमारे यहाँ के, मैं उस एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा जुडिशियल एस्पेक्ट है वो, लेकिन ये प्रैक्टिकली सब लोग जानते हैं कि डाउरी एक्ट में जिस तरह से आजकल इम्प्रिजनमेंट हो रहा है वो कितना थियेटिकल है और कितना प्रैक्टिकल है। डाउरी एक्ट भी आज शायद ही एग्जैक्टली डाउरी एक्ट की वजह से शायद ही कोई मर्डर होते हैं, उसमें बहुत सारे रहते हैं अपने बेसिक के इनहेरेंट रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, दूसरे इश्यूज को लेके हो सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर कोई डेथ होती है तो उसमें पूरे फैमिली को आना होता है। तो वो सारे लोग थे, वो दे वर जस्ट इनोसेंट, उन्हें पता ही नहीं था कि वो ऐसा क्या करते कि हम लोग जेल में ना आते या हमें ये पनिशमेंट ना मिलती। उन लोगों को हमें बाइफरकेट, सबसे पहला काम है जेल को अगर रिफॉर्म करना है या करेक्शनल एक्टिविटीज को एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, उनको साकार करना है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए प्रैक्टिकली कि हमको ऐसे लोगों में डिफ्रेंशिएट करें, हार्डकोर को अलग करें और इम्पल्सिव क्राइम, सिचुएशन वायलेंस को अलग करें। उसके बाद हम लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि जेलों में जनरली जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के होंगे, जो 10% लोग हैं, वो आइदर इन सिविल सोसाइटी और इन जेल सोसाइटी, उन लोगों का रहता है अपने को डोमिनेट करना और अपने जो उनका एरिया है अपना गैंग को बढ़ाना। तो जेलों से एक्टिविटीज होती है, इलीगल एक्टिविटीज होती है या क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, उसमें कहाँ जब ये लोग डोमिनेट करते हैं तब जेल में लीगल एक्टिविटीज होंगी। जो 10% है वो 90% को भी डोमिनेट करते हैं। और जितनी सारी बहुत सारी चीजें जब आती हैं सुनने में कि जेलों से इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, रैंसम हो रहे हैं, वो कौन कर रहे होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़ लिख के जाएंगे तो वो कम से कम इस तरह से आप एक्सटॉर्शन नहीं करेंगे। दे मे बी करप्ट बट नाउ दैट। फिर होता क्या है, वो कमजोर हो सकते हैं या इतने कैपेबल नहीं हो सकते कि उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए और उन लोगों को कंट्रोल कर पाए। 10% एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज हैं इनसाइड द जेल। तो अगर ये काम कर लिया हम लोगों ने, मैंने अपने दोनों जेल, मेरी दूसरी जेल है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इसी काम को हम लोगों ने किया। इसमें इट टेक्स द टाइम एंड अ लॉट ऑफ पेन उन लोगों को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए सबसे अच्छा एक सिस्टम होता है जो हमने शुरू किया, ग्रीवेंस रिडक्शन सिस्टम के लिए कंप्लेंट एंड सजेशन बॉक्स लगाए हर जगह। वहां से जो एक कॉमन मैन है जो क्रिमिनल नहीं है, वो अपनी जब उसको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें रिफॉर्म करना चाह रहा है या हमें अच्छा बनाना चाह रहा है, तो वो अपनी मन की बात उसमें लिख के अभी तक पहुंचाएगा और उसकी आइडेंटिफिकेशन होगा कि क्रिमिनल कौन है, हार्डकोर क्रिमिनल कौन है। फिर उन हार्डकोर क्रिमिनल्स को, उनको जो कानून का भय है वो दिखाना पड़ेगा, जिससे वो कॉमन मैन का एक्सटॉर्शन ना कर पाए। तो पहले एक हो जाता है सुपर हाइपोथेटिकल, ये हो जाएगा सुपर आइडियलिज्म में हम जाएं कि हम सबको रिफॉर्म कर देंगे।
ये स्टेप वाइज होगा। अगर हम चाहें कि सारे जो जितने 100% लिमिट्स हैं, जैसे यहाँ मुजफ्फरनगर जेल में 2500 है अराउंड, तो सबको एक साथ अगर हम सोचेंगे सब ठीक हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं हो पाता है। तो हम लोग को पहले हमने यही किया, 10 जो इतने क्रिमिनल थे उनको अलग किया, फिर उनको कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, तो बाकी जो 90% लोग जो कॉमन मैन थे उनको भरोसा दिलाया कि ये लोग उनको एक्सटॉर्ट नहीं कर पाएंगे, उनका किसी तरह का नहीं कर पाएंगे। फिर उन 90% लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज की जाती है इस तरह की, वो लोग अपने आप को जो भी उन्होंने किया था विलिंगली और अनविलिंगली, उसको वो उसके बारे में अपना थिंक प्रोसेस डेवलप करते हैं। वो थिंक प्रोसेस तब डेवलप करेंगे कि जब वो फ्री होंगे, जब जेल में उनका किसी तरह का शोषण नहीं हो रहा होगा, कोई उनके लिए परेशानी नहीं होगी, एक हेल्दी एटमोसफेयर मिलेगा, तब वो ये सोच पाएंगे कि मैंने क्राइम किया था, गलती से हुआ, या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए था। जैसे कई लोग उसमें आते हैं, चेक बाउंस में आते हैं, 420 में आ रहे हैं, 420 के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे वर नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स, उन्हें पता ही नहीं था। कई लोगों को चेक बाउंस भी पता ही नहीं होता कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होने से इतना बड़ा काम हो जाएगा, चेक इसी कर दिया, पैसा नहीं है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। तो ये सारी चीजें लैक ऑफ अवेयरनेस से भी होती है। तो वो सारा जब अंदर आएगा, या कई लोग ऐसे होते हैं बिजनेसमैन है, वो कोई साइन करते जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ का साइन करना होता है। तो ये अवेयरनेस हमारे लीगल अवेयरनेस उतनी नहीं है, तो बहुत सारे लोग इस वजह से आजकल बहुत सारे यूथ आ रहे हैं जो रील्स बना रहे हैं अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, या स्टंट करते हुए कोई रील्स बनाए, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, जेल में आ जा रहे हैं। तो ये सारी, अब उन लोगों को क्या करना है, उनको बाइफरकेट रखना होगा उन हार्डकोर क्रिमिनल से, क्योंकि वो क्या चाहेंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट लोग आए और वो अपने आप को उनसे इम्प्रेस करें। इसके लिए जो एक हमारी थियोरी है पर्टिकुलर, रोल मॉडल थियोरी ऑफ क्राइम, इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं हम लोग 6 साल से। इस थ्योरी में क्या है, रोल मॉडल थ्योरी, हर ईच एंड इंडिविजुअल हैव अ रोल मॉडल। हम जिस फील्ड में भी हैं अपना एक रोल मॉडल बनाते हैं, हर आदमी एक रोल मॉडल बनाता है। यहाँ अगर हमें कोई एडवोकेट बनना होगा तो एक किसी बड़े एडवोकेट को हम अपना रोल मॉडल बनाएंगे, अगर हमें एक बड़ा सिंगर बनना है तो इसको एक रोल, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं तो वो हमारा आइडिया देता है। ऐसी जो क्रिमिनल जिनका बेसिक इंस्टिंक्ट में थोड़ा बहुत क्रिमिनल होता है, वो भी अपना अगर क्रिमिनल बनना चाह रहा है तो वो एक बहुत बड़ा माफिया है, उसको अपना रोल मॉडल बनाएगा। रोल मॉडल उसको बनाता है जो सबसे पावरफुल होगा। अब वो अगर जेल में आता है कोई टीनेजर या फिर इस तरह का 20-25 साल का व्यक्ति, और वो उसको अभी क्लियर नहीं कि बनना क्या है। जब बाहर उसने सुन रखा था एक पर्टिकुलर माफिया है, उसका शहर में इतना बड़ा गलबा था और सब चीजें बड़ी अच्छी थी, इसके आगे सब लोग घुटने टेकते थे। जेल में आता है, जेल में भी वैसा ही देखता है, उस माफिया को उसी रूप में देखता है कि जेल में उसका अलग से दरबार लगा हुआ है, उसके गुर्गे खड़े हुए हैं, सारी फैसिलिटी जो उसको मिल रही है, उसके लिए कहीं जेल जैसा लग नहीं, 4 लोग उसके पैर दबा रहे हैं। तो वो सोचेगा नहीं ये ठीक है, रोल मॉडल यही होना चाहिए, ऐसा ही बनना है, क्योंकि सारी ताकत तो उसके पास है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग जेलर, जेल सुपरडेंट, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, तो ये सारी ब्यूरोक्रेसी भी इससे डरी हुई है, मतलब इसके आगे भी रुजू कर रहे हैं। तो वो सोचेगा ये ठीक है, ऐसा ही बनना चाहिए। इस मौके को वो जो माफिया है वो देखेगा उस इन्वेस्टमेंट को, उसको किसी तरह से उसको अंदर ताड़ित किया जाएगा। तो वो पहले क्या करेगा, प्राइम फेज में पहले दिन वो आएगा, ऑफिसर से मिलेगा कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो क्योंकि माफिया का वहाँ कंट्रोल है तो वो ऑफिसर उसको कोई रिलीफ नहीं दे पाए। कहाँ से मिलेगा, माफिया की शरण में जाने से उसको रिलीफ नहीं गया। उसके बाद फिर उसका जेल में उसका भी बढ़िया सिस्टम बन गया। तो इसने अब रोल मॉडल एक माफिया को बना लिया, और ये माफिया भी ऐसे लोगों को ढूंढती है, जब वो बाहर छूट के जा रहा हो तो इसको एक टारगेट दिया जाएगा कि ये काम करो, तो उसका इकोनॉमी भी जनरेट होगी उससे, और धीरे धीरे वो एक बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट रिफॉर्म का जो फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें नए क्रिमिनल बनने से रोकना। जो क्रिमिनल हैं, एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको रिफॉर्म करना फिर सेकंड फेज है, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो इनोसेंट लोग अंदर आ रहे हैं वो रोल मॉडल ना बना दें उसको, और फिर से बड़े नए क्रिमिनल ना बन जाएं। तो ये चीज तब होगी जब जेल में लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, कानून का शासन होगा,
रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा, तब ये चीज होगी। क्योंकि वो इंस्पायर नहीं होगा, वो इंस्पायर इसकी एक डिफरेंट चीज क्या होगा, जब लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश है तो जो माफिया बाहर जिसका बहुत सारा उसने जलवा भोपाल देखा था कि कितना है, जब वो जेल में आता है तो देखता है कि वही माफिया जो अकॉर्डिंग टू रूल तरह से आ रहे हैं, माफिया हो जाओ जेल में आ जाए, तुमको ये सब करना होगा। तो ये कौन करा रहा है, उसको लगेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है, फिर उसका रोल मॉडल कौन होगा, जो पावरफुल है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। तो रोल मॉडल चेंज हुआ, अब वो सोचेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे जाएगा, तो उसके लिए वो उस तरह की कोशिश करेगा। अगर 20, 21, 25 साल का लड़का कोई जेल में आया हुआ है तो वो फिर इस थ्योरी पे काम करेगा, नहीं मुझे तो ऑफिसर बनना है, क्योंकि पावर यहाँ है, जिसके आगे बड़े बड़े माफिया भी यहाँ बिल्कुल सरेंडर हो गए हैं, तो रोल मॉडल उसका चेंज हुआ। तो ये रोल मॉडल थ्योरी ऑफ क्राइम में इस पे काम करते हैं, तो इससे नए क्रिमिनल जनरेट नहीं होंगे। जो 90% लोग आए हुए हैं, उसके लोग जो समाज के किसी एक छोटी सी गलती की वजह से आ गए, उनको रिफॉर्म करना है पहले। अब वो रिफॉर्म कैसे होंगे, एक हेल्दी एटमोसफियर क्रिएट हुआ, रूल ऑफ लॉ है जेल में, तब उनको हमें 90% के लिए कैसे काम करने होंगे जो उनको रिफॉर्म दे पाए। तो रिफॉर्म कब होगा, पहले वो एक्सेप्ट करें कि उनकी गलती क्या हुई। इसके लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज, लाइब्रेरी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, क्योंकि अभी तक जेलों में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बहुत कम काम हुआ है। पिछले 6 साल में हमने इसको काफी प्रैक्टिकल में लेके आए, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है जेल में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। क्यों करता है, क्योंकि जेल में जब कोई भी व्यक्ति आता है, अगर वो स्पिरिचुअल था या नहीं था, जेल में एम्पल टाइम होता है, एक पैटर्न फिक्स होता है, 5:30 पे उसे उठना होगा, गेट इट ऑफ बेड, उसके बाद उसका 7 to 8 में उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और बाई 11 और 12 उसका लंच हो जाएगा। उसके बाद वो बैरक उसका क्लोज हो जाएगा, फिर 3 या 4 बजे अलग अलग जेलों का अलग अलग पैटर्न होता है, उसके फिर से चले जाएंगे, उनका टी ब्रेक होगा, और 5 to 6 में बाई हार्डली बाई 7 डिनर होगा। तो एक फूडिंग पैटर्न बड़ा क्लियर होता है, इतने समय पे ही खाना है, ऐसा नहीं कि उसे डिनर कभी 11 बजे करना है, 12 बजे करना है, तो उसका समय एकदम क्लियर होता है, टाइम शेड्यूल उसका। कोई ऐसा भी नहीं कि कभी कोई मिलने आ गया उससे, ये भी पॉसिबल नहीं, वो भी एक शेड्यूल्ड टाइम है, उसी में मिलने आएंगे। तो उसको क्या करना है, अब जो टाइम है उसमें सोचना शुरू करता है। अगर उसने क्राइम नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं, ज्यादातर लोग नहीं जानते वहाँ के, तो वो सोचता है कि जो इंडियन माइथोलॉजी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो सब कुछ जब हमारे कंट्रोल में नहीं चीजें होती, नहीं समझ में आती, तो वो ऊपर वाले पे छोड़ते हैं कि अरे ऊपर नहीं है। तो वो यहाँ सोचना शुरू करता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। इसके लिए वो फिर कुछ स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ेगा या कुछ मोटिवेशन लिटरेचर पढ़ेगा। तो अगर लाइब्रेरी है वो और स्पिरिचुअल एटमोसफियर है, तो वो वहाँ जाएगा, मंत्र में जाएगा, कोई मंत्र का चैंटिंग करेगा। और ये डेफिनेटली ये साइंटिफिक है कि ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिवली, एक एटमोसफियर पॉजिटिव क्रिएट होता है ये। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में फिर जो बड़े सेंट्स हैं, कुछ इस तरह के उनको बुला के जेलों में इस तरह करना चाहिए कि जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। उसके बाद अगर वो एक आदमी ऐसा आ जाता है कि अपने आप को वो, अगर कहीं उसे समझ में आता है कि उसने क्या किया था ऐसा जो गलत था, तो उसको फिर वो अपने आप को इससे दूर ले जाएगा, यानी अपना वो प्रायश्चित करेगा कि नहीं मैंने ये किया था, इसलिए मुझे मिला है, अब मुझे एक अच्छा आदमी बनना है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन पे भी काम करना चाहिए। और अभी आईसीए में मेरा प्रेजेंटेशन था, इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी है चंडीगढ़ में, वहाँ पर इस चीज पे मेरा जो स्पिरिचुअल डायमेंशन को वहाँ रखा था, तो बाद में ये हुआ कि मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ द ग्रेजुएशन। ये काम करता है। उसके बाद अगर ये सारी एक चीजें ये हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एटमोसफियर है, तो यहाँ से रिफॉर्म की प्रैक्टिकली ये सेशन होता है कि रिफॉर्म आप हो सकते हैं। ये रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म इनसाइड द ह्यूमन बॉडी रिफॉर्म, वो आदमी का नेचर बदलना है, कि वो बाहर से आया था क्रिमिनल या कहीं, जैसे कि जो कभी किसी के साथ गलत हुआ है एक बार, तो वो बदले की भावना से आएगा, रिवेंज वो ये आएगा कि मुझे छूट के जाना है, फिर मैं बदला लूंगा।
उन लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहिए, जैसे अभी हमने किया, जितने 302 के कन्विक्टेड थे हमारे यहाँ, उन सबको एक तरफ उठा के उनसे काउंसिल कराया। बाकी लोग रिवेंज का अपनी फीलिंग है वो ये बताएं, व्यक्ति जब जेल में आता है कोई आदमी, अगर मर्डर करके आया तो जो मरा उसकी फैमिली को कष्ट होगा कि भी गया, धीरे धीरे उसके बिना जीना सब सीख लेते हैं, उनकी नॉर्मल रूटीन लाइफ आ बच्चे ये फैमिली हर दिन मरती है, हर दिन वो कोर्ट में जा रहे हैं, एडवोकेट देख रहे हैं, जेल में आने का जो इंटरव्यू सिस्टम है, जो फैमिली की मुलाकात का सिस्टम है, बड़ा पेनफुल है। इट टेक्स 2 to 3-4 आवर्स। बाई 7 o'clock पर्ची बनेगी, फिर बहुत सारी लंबी सी लाइन होगी, उसमें बहुत सारी, तो ये सारा उसकी फैमिली को रोज क्लियर करना पड़ता है। जब जो जिसका मर्डर हुआ उसके फैमिली को 1-2 साल में वो नॉर्मल हो गए सारी चीजें। तो ज्यादा कष्ट किसको हो रहा है? जो मर्डरर था, जो क्रिमिनल, जिसने क्राइम किया। तो वो लोग उसको एक मैसेज दें, ऐसे लोग जो अभी भी जिनमें रिवेंज का फीलिंग है, वो मैसेज देंगे तो वो ज्यादा काम करेगा उन लोगों पे। तो वो सोचेंगे कि नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी का बदले की भावना में हम मर्डर करके दोबारा जेल में आएंगे, तो हमारी फैमिली ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है, बजाय जिसके साथ हम क्राइम करेंगे, जो विक्टिम है उसकी फैमिली कम इम्पैक्ट होगी, हमारी फैमिली ज्यादा इम्पैक्ट होगी। तो ये जब उसको आ जाता है, अगर ये फील उसके मन में आ जाएगा, तो ये तय है कि वो बाहर जाने के बाद फिर से उस तरह का कोई क्राइम नहीं करेगा। वो सोसाइटी में अपने आप को फिर से एक कॉमन मैन, ये कि एक अच्छे आदमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। फिर इसमें रिफॉर्म के अगले स्टेप में आते हैं, ऐसा कुछ जैसे उसको कुछ ऐसा कर देना, वोकेशनली ट्रेन करना या उसको स्किल्ड करना जो अंदर है। स्किल्ड के लिए, उसके लिए अब सारे जगह स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से स्किल्ड ट्रेनिंग भी किए जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ 8 बैचेज चल रहे हैं, 600 लोग ट्रेंड हो चुके हैं डिफरेंट कोर्सेज में, कंप्यूटर में, मोबाइल रिपेयर सारी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सर्टिफाई भी किया जा रहा है। इसके बाद, लेकिन ये तो हुआ रिफॉर्म का इनिशिएटिव, रिफॉर्म हो गया, उसके बाद ये सारी चीजें ठीक है, जैसा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट सेम जा रहे हैं और सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, और रिफॉर्म भी हो गया, स्किल्ड भी हो गया, और वो अच्छा बना लिया अपने, अपना सारा उसने अपने आप को एक तरह से पूरा तरह से करेक्ट कर लिया, जो भी दिक्कतें थी उसने ठीक कर ली, और वो अब चाह रहा है अच्छा इंसान बनूंगा जाके, उस पर सर्टिफिकेट भी है, वो जाके बाद जॉब करना चाहता है। लेकिन इसके बाद अब अगली प्रॉब्लम आती है कि रिहेबिलिटेट सोसाइटी में कैसे हो। तो अभी भी जो सोशल स्टिग्मा है हमारे यहाँ प्रेजेंट का, कि एक जो सामान्य भाषा में कहेंगे जेल काट के आया है, अभी भी कोई भी सिविल सोसाइटी के ज्यादातर लोग ऐसे आदमी से बचेंगे कि ये जेल काट के आया है, या जब वो जेल में था तो उसकी फैमिली को या उसके बच्चों को स्कूल में भी ये स्टिग्मा झेलना पड़ता है। कई सारे बच्चे स्कूल से इसलिए निकाल दिए जाते हैं कि इसके पिता को जेल हो गई। तो ये जो आइसोलेशन है, तो उसके बाद वो कहीं, क्योंकि इस तरह की कई प्रैक्टिकल देखे गए कि वो एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया जेल में, उसने बहुत काम किया, 5 साल अकाउंटेंसी सीखी, वो एक फर्म में जाके अपना इंटरव्यू देता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू हो रहा है, और उसको कंपनी कहती है कि जी हम आपको रखेंगे और जॉब आपकी कंफर्म है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पूछ रही था कि आपको जो प्रैक्टिकल, आपने जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कहाँ हुई, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ का है, तो वो जैसे ही बताता है कि मेरा, मैं जेल में रहा था 5 साल, उसके बाद कंपनी डिनाई कर दी थी आपको नहीं होगा। ठीक है, वो स्किल्ड लग रहा था, कंपनी के मानकों पे पूरा था, स्टैंडर्ड पूरे कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक वजह से कि जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो जेल का है, इसलिए हम उसे नहीं रखेंगे। ये चीज सोसाइटी में बदलनी होगी। तो प्रिजन रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट अब जो है मॉडल प्रिजन एक्ट में, कि हमें सोसाइटी से इंटरेक्शन करना है, सोसाइटल इंटरेक्शन जेल्स का। अभी तक जेल एक क्लोज एरिया माना जाता है जहाँ पर जनरली सोसाइटी इंटरेक्ट नहीं करती। उसमें हम लोगों ने यहाँ किया है पिछले 1 साल में, हर महीने एक कॉन्वेंट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का 30 से 35 बच्चे लाके उनका जेल में इंटरेक्शन कराते हैं। वो बंदियों से इंटरेक्ट करेंगे, जेल की एक्टिविटीज देखेंगे कि इनसाइड द प्रिजन क्या हो रहा है, जैसे जब
वो जेल में देखते हैं कि यहाँ लाइब्रेरी भी है, यहाँ कंप्यूटर लैब है, यहाँ योगा हो रहा है, यहाँ पर लोग रेडियो स्टेशन भी है जहाँ पर लोग आरजे का कोर्सेज भी चल रहे हैं, मॉडलिंग का भी चल रहा है, ब्यूटिशियन का भी चल रहा है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज जब वो देखते हैं तो उनका बच्चों का एक माइंडसेट चेंज होता है कि जेल में सारी वो चीजें होती हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में हो रही है या कॉलेजेस में हो रही हैं। तो वो जब अपने घर में जाके बताते हैं कि जेल ऐसा नहीं होता, कि वहाँ सारे जनरली एक परसेप्शन जिसने जेल नहीं देखा होगा या कितने जो डिस्टर्ब जेल है वहां देखा होगा, तो उसमें ये लगेगा नहीं जेल जाने में डर लगेगा। मैंने तो आप लोगों को भी जो बच्चे हैं उनको डर लगेगा जेल में जाने में, तो बस इस तरह से बड़े बड़े खूंखार क्रिमिनल होंगे देख के जिनको डर लग जाएगा। तो इसलिए जेल के नाम से डरती है सोसाइटी। जब ये चीज होंगी, रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज लोगों को पता होंगी कि जेल में भी अच्छी चीजें हो रही हैं, और ये जो आदमी जो जेल में गया था ये 5 साल में बाहर आया तो वो कुछ सीख के आया है। ये हो सकता है एक कई अच्छी किताबें पढ़ के आ गया हो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आजकल पुराण पढ़ रहे हैं हमारे जेल में, 18 पुराण, अदरवाइज घर में कोई नहीं पढ़ सकता था। तो निश्चित है जो इतना लेवल पर पढ़ लेगा, या बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो इसमें रिहेबिलिटेशन के कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली हम मुजफ्फरनगर में अभी हम लोगों ने किया है, जिसमें हमारे 5 केस स्टडीज हैं जो इसको पूरा करती हैं। वो रिफॉर्म के बाद रिहेबिलिटेट हुए हैं, सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट किया। उसके लिए क्या किया, सोसाइटी स्कूल से इंटरेक्शन किया, जितने बिजनेसमैन के एसोसिएशन है या एनजीओ हैं, लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, इन सबका भी इंटरेक्शन सोसाइटी में हुआ। जब इन लोगों ने एक बार जेल को विजिट किया तो ये समझे कि जेल, हाँ जेल इस तरह का नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं, तो इनका परसेप्शन चेंज हुआ। फिर वो जेल में बहुत सारी एक्टिविटीज जो लोग कर रहे हैं, वो लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कई लोगों को, या बहुत सारे जैसे फंड की भी प्रॉब्लम होती है इन लोगों के पास, तो कई सीएसआर के मतलब की बहुत सारी फंडिंग होती है। लेकिन वो फंडिंग अन्य जगह करते हैं, जेलों में नहीं करना चाहता जनरली आदमी। लेकिन जब जेल की रिफॉर्म एक्टिविटीज को उनको पता लग जाता है, फिर वो लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, लगभग सारे बिजनेस क्लब जुड़े हुए हैं। और वो लोग जब देखा है उन्होंने कि जेल में ये लोग अच्छे जो जितने हैं वो लोग अच्छे होते आ रहे हैं, तो वो लोग जॉब दे रहे हैं। अभी 5 लोगों को जॉब दी गई है जो जेल से छूट के गए हैं, उनकी गन्ना जॉब मिली है। 2 फीमेल थी जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स अंदर ही किया, ट्रेनिंग यही हुई, उसके बाद अपना ब्यूटी पार्लर एस्टेब्लिश किया उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ने कोर्स किया था, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप उसने शुरू किया है। इस तरह से दूसरा यहाँ जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक टेलरिंग का कोर्स हुआ जिसमें बहुत सारे, तो ये यहाँ का एक क्लॉथ स्टोर है, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल देते हैं, डिजाइन देते हैं, यहाँ इनमेट्स उनको प्रिपेयर करते हैं क्लॉथ को, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इतनी डिमांड है कि वी आर अनेबल टू सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड जेल प्रोडक्ट्स की। हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं, एक सिलाई सेंटर बनाया गया तो बैग बना रही हैं, वो बैग अभी तक ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी गया, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया। उन बैग्स की भी इतनी डिमांड है कि जब भी लोक अदालत होता है, कोई होता है, वहाँ पर हर जगह कैंप लगता है, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी में वो परसेप्शन चेंज होता है, तो रिहेबिलिटेशन में आसानी होती है। अदरवाइज हम रिफॉर्म कर दें, स्किल्ड कर दें इनमें, तो बाहर जाने के बाद फिर से अगर उसको लाइबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, कोई उसे जॉब नहीं देगा। या एक राजस्थान गवर्नमेंट की उन्होंने एक मूवी बनाई थी रोड टू रिफॉर्म, तो वहाँ ये एस्पेक्ट फाइनली उनका जो एंड होता है वो नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ होता है कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया कई लोगों को। एक इसी ब्यूटी पार्लर जैसा इसने ब्यूटी पार्लर अपना खोल लिया था जेल से सीखने के बाद। तो जब वो काफ़ी पॉपुलर हो गई, उस पर बहुत सारी बुकिंग आने लगी। जब किसी को पता लगा मीडिया पर्सन को कि तो जेल में सीखा था, तो उसने वो एक दिन अपना न्यूज वायरल कर दी, तो सबको पता लग गया, उसने जितनी भी बुकिंग थी उसकी सारी कैंसिल हो गई क्योंकि वो जेल रही थी, ये मैसेज चला गया। ये चीज उस मूवी में देखा कि इसको बदलना कैसे है। कि जो हमारे यहाँ या मुजफ्फरनगर में जिसने ब्यूटी पार्लर किया है, उसके लिखा ही है, उसने अपने ब्यूटी पार्लर का जो एडवर्टीज किया है उसमें लिखा गया है ट्रेंड इन मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर जेल का जो परसेप्शन वो सोसाइटी में चेंज हो गया, तो उसकी डिमांड ज्यादा है। अब कोई इस वजह से उसको इग्नोर नहीं कर रहा कि ये जेल में इतनी ट्रेनिंग ली, उसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं कि इस जेल में ट्रेनिंग ली, निश्चित है ये अपने को एक मॉडिफाइड पर्सन बना के आएगी।
तो रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट ये है प्रैक्टिकली। बाकी थियोरटिकल एस्पेक्ट्स तो बहुत सारे हैं जो हम लोग पढ़ते ही, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये करना होगा। सोशल स्टिग्मा है इसको खत्म करना होगा जेल का, और जेल में भी ये करना होगा कि जेल में कोई भी जा सकता है। जेल में जो है दे आर नॉट इनह्यूमन, दे आर deprived temporarily from their liberty but not permanently. Temporary isolation, उसको ऐसे जैसे अभी कोविड आया, लोग इन्फेक्ट हुए, आइसोलेट किए गए, तो क्या एक वो डिजीज थी, इन्फेक्शियस डिजीज थी, हमें जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है तब तक हमें आइसोलेट रखना है। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक बार वो उसको आइसोलेट किया गया हम जीवन भर, भाई ये तो कोविड हुआ था अब इससे कभी मिलेंगे नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। इसी तरह से जो क्राइम भी है एक डिजीज है। अगर हमें ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको, अगर ये वो जाके अपने आप को वेरीफाई कर पा रहा है कि मैं जेल में गया, मैंने कुछ भी किया था, मैंने गलत किया था, नाउ आई एम नॉट रिफॉर्म पर्सन, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, मैं रिफॉर्म हूँ, मैंने जेल में ये सीखा है, मैंने जेल में इतना अच्छे काम किए हैं, तो उसे अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फेलियर ऑफ सोसाइटी, नॉट दैट पर्सन। क्योंकि फिर उसे कहाँ जाएगा, फिर वहीं जाएगा, उसी क्रैम में जाएगा। तो सोसाइटी के अच्छे लोग के सब जगह गया, वो सब जगह उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, बट किसी ने उसके स्किल्ड को खूब अप्रिशिएट किया, नहीं यू आर वेरी स्किल्ड, बहुत अच्छे हो, लेकिन स्किल्ड कहाँ हुए, जेल में हो, मतलब जेल में रहे। फिर उसको इस आधार पे हम इग्नोर करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो वापस फिर से वहीं जाएगा जहाँ से आया था, क्योंकि सर्वाइव करना है। तो ये सारी चीजें थी। आई थिंक टाइम काफी हो गया है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो किसी थियोरटिकल एस्पेक्ट में नहीं गए, तो आई थिंक आई शुड ओवर। Thank you so much, sir, for sharing so many real-world examples with us. With this, I would now invite our audience to ask any questions that they may have from Sitaram, sir, pertaining to prison reforms in India. Yes, sir, I have a question that how can we promote a culture of empathy and understanding among prison staff and inmates to create a positive and healthy environment? नेक्स्ट पार्ट, प्रिजन स्टाफ को भी हेल्दी एटमोसफियर के लिए अवेयर करने के लिए, बेसिकली जो प्रिजन स्टाफ एंड इनमेट्स, इट मस्ट बी हेल्दी इंटरेक्शन। प्रिजन स्टाफ को भी काउंसिल करना होता है, क्योंकि क्या होता है जहाँ जेल अगर कंट्रोल नहीं होती है चीजें, तो कई बार इनरेंट जो ग्रीवेंसेस होते हैं वो प्रॉपर चैनल तक नहीं पहुंचते हैं। तो वहाँ पर जो स्टाफ होगा वो या तो कभी कभी डर, या कभी उनके जो अंडर टेबल जो उसको प्रॉफिट कहते हैं उसमें आने के बाद, तो वो चीज़ें कुछ गलत करने लगते हैं, क्योंकि डोमिनेंट अगर क्रिमिनल कर रहे हैं तो उनसे इंस्पायर होके वो लोग भी क्रिमिनल मेंटेलिटी के हो जाएंगे। अब हेल्दी एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए एक तो लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा है, तो इनमेट्स को भी ये फील है कि उनको अच्छा होना है, कुछ गलतियां हो गई तो वो ठीक करनी है। वहीं हमें स्टाफ को भी टाइम टू टाइम काउंसिल करना चाहिए, और उनको भी बताना, उनको भी ये किस तरह से करना चाहिए उनको कि उनको माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है, और हमें अपना अच्छा काम करना है। जो काम क्या है हमारा, रिफॉर्म करना उनको। तो इस तरह से उनको अवेयर करेंगे और एक इंटरेक्शन रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है जेल में, ये कि दोनों लोगों का ग्रीवेंस रिड्रेसल का पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता, चीजें ठीक से नहीं आ पाती अथॉरिटीज के पास। उसके लिए हम लोगों ने स्टाफ के लिए भी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किया है। और अगर पर्टिकुलरली जेल का देखा जाए तो यहाँ की ड्यूटीज जो होती है वो बड़ी क्लोज्ड होती है, तो उसका सोसाइटल इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो जो स्टाफ है वहाँ का, खासकर लोअर स्टाफ है जो वार्डर लेवल का, जेल वार्डर, ड्यूटी आवर्स भी जेलर डिप्टी जेलर का 5:30 से शुरू होता है मॉर्निंग। 5:30 पे जेल खुलवाना है उनको, ये सारी चीजें करनी है, फिर 9:30 तक उनको जेल जब तक क्लोज नहीं हो जाएगी। तो बहुत सारे एंगेजमेंट, ये नहीं उनका जो
फैमिली लाइफ और सोसाइटल लाइफ बैडली इम्पैक्ट होता है। तो इनको ये एहसास कराना होता है कि हमें समय समय पर एक हेल्दी गैदरिंग हो, जेल में प्रोग्राम्स भी कुछ हों, कल्चरल प्रोग्राम जो हम लोग यहाँ कराते हैं, तो एक हेल्दी एटमोसफियर मिलता है उनको। तो स्टाफ को भी ये फील होना चाहिए कि वो लोग भी एक नॉर्मल पर्सन है। तो ड्यूटी में कुछ रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, छुट्टी की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। जब स्टाफ का माइंडसेट हेल्दी होगा तो वो प्रिजनर के साथ हेल्दी वे में इंटरेक्ट करेगा। अदरवाइज वो डिप्रेशन में जा रहा होगा तो उसका फिर वो व्यवहार वही रहेगा, एक एब्यूजिव लैंग्वेज का जो जनरली होता है। जेंट्स में यही होता है कि स्टाफ का एब्यूजिव लैंग्वेज होगी, इनमेट्स की, अगर इनमेट्स डोमिनेट कर रहा है तो उसकी एबिलिटी होगी, तो ये नेगेटिव एटमोसफियर होता है। तो अगर हम इन सारे रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे काम करते हैं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आइदर वो एजुकेशन एस्पेक्ट, वोकेशन एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तो इससे एक हेल्दी एटमोसफियर क्रिएट होता है। हम लोगों ने यह शुरू किया है, हर महीने हम पूरे स्टाफ के साथ 250 अराउंड स्टाफ होता है, मंथ के लास्ट में किसी दिन एक डिनर रखते हैं, साथ में एक मीटिंग रहती है, उसमें सारा जो भी 3-4 घंटे का पूरा प्रोग्राम रहता है, तो उसके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, स्टाफ भी मोटिवेट हुआ है। और वो जितनी स्टाफ में नेगेटिविटी थी, बहुत सारे ड्रग सप्लायर थे स्टाफ के लोग भी, वो सारे अपने आप को चेंज किए हैं लगातार काउंसलिंग से। इसी तरह से ड्रग्स की समस्या जेलों में बहुत, फिर इनमेट्स को भी इस ड्रग्स के अबाउट अवेयर किया है। बहुत सारे एक पैनल बनाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 9 पर्सन का, जो ड्रग्स के लिए उनको रिहेबिलिटेट किया, तो ड्रग एब्यूज भी काफ़ी कम हो गई। तो ये मल्टी फेसेट प्रोसेस है जिसमें हम लोग इस चीज़ को, हेल्दी एटमोसफेयर को क्रिएट कर पाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? So I assume we are done with all the questions that our audience had. Moving forward, I would request the managing team to play the video of Rotaract Club of Noida Youth that would enable our participants to know more about our organization.
Thank you, everyone. Moving on. Now, I'd like to invite Aslam sir for his concluding remarks. Over to you, sir. Thank you so much, everyone. I think it was a wonderful session and quite an insightful session. Firstly, I would like to congratulate Rotaract Club again for letting most of us know. I did not, of course, I heard your name, but the kind of human services to the society that you are doing uh, and bringing together friends from across the globe. Consider me also as your friend from from within the country and within the globe from today onwards. And it was a very nice session to hear from Sitaram Sharma sir also about the conditions and the kind of activities that he has undertaken for his jurisdiction and things. Some of the questions that were put to me actually, I think, stand answered with his talk on the subject about how community involvement and the involvement of jail authorities and interaction can go a long way in reforming the um, prisoners. I think it is a it was a very wonderful talk and very wonderful program by all of you. I have nothing more to add. All the best. Thank you so much, sir. It was really an eloquent session. Moving on, I would like to invite Sitaram sir for his concluding. So, are you there? I think he is not there in the participant list. Okay, so then we Maybe proceed. net connectivity issue or something. So then, unfortunately, we can move on. Now we are at the end of the program, and at last, I would like to invite Rotaract Shaki to deliver a vote of thanks for the session. Hello everyone, good evening. So on the behalf of Rotaract Club of Noida Youth, I, Rotaractor Shambhavi Shahi, Secretary of the Rotaract Club of Noida Youth, would like to extend our heartfelt gratitude to every one of you for joining today for this enlightening webinar on peace and conflict resolution and prison reforms. We are truly honored to have had the privilege of hosting such distinguished speakers, Mr. Sitaram Sharma and Mr. Aslam Ahmed, who shared their invaluable insights and experiences with us. I also want to specifically thank our club mentor Karan Bhaiya and our club trainer Vartikadi for providing us with guidance and support throughout the planning process. A big shout out to our president, Rotaractor Alia Mirza, for the leadership and vision that helped us to bring this event to life, who also played an important role in coordinating all the activities seamlessly. Young, our Director of International Service, and Raila ensured the event's professionalism and smooth execution, also who brought an international perspective to our event, enriching the experience. Nidhi, Joint Director of Professional Service, for all her technical support. Disha and Tarishi, who amazingly hosted the event. I also want to acknowledge the contributions of Gayatri, Director of Social Media. Furthermore, I would like to thank Rotaract Club of Vizag Diamonds, Rotaract Club of Chittagong City, Rotaract Club of Ahmedabad Illos, Rotaract Club of Mumbai Sky City, Rotaract Club of Dharmapet MP Dio Memorial Science College, Rotaract Club of Delhi South Central, Rotaract Club of uh, Narsa, uh, Narsapet Phoenix, Rotaract Club of Kharad City, Rotaract Club of Young Souvenirs, Rotaract Club of Chittagong Crown, Rotaract Club of Ames, Rotaract Club of Madras Mount, Rotaract Club of Delhi Vikas, Rotaract Club of Symbiosis Law School Pune, and Rotaract Club of Jindal Global University. Thank you once again for being a part of this event, and we look forward for your continued support in our future endeavors. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you for the wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I can log off now? Yes, sir. Yes, sir.
Everyone can leave the meeting now.